Okay, so just a short recap of what we did. So I'm going to discuss the polymerization of pentene. I'm going to quickly draw this. Pent is 5 carbon atoms, और उसके अंदर ना कहाँ पे there is a double bond on the second one, और बाकी इसके साथ 3 H होंगे. This will have 2 hydrogens. अच्छा, इसके साथ this carbon is going to have 1 hydrogen. इधर हम draw कर लेते हैं. This carbon atom also would have 1 hydrogen, और इसके साथ 3 H होंगे. पहला काम क्या करना होता था कि डबल बॉन्ड के राइट, ये जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, इन दो कार्बन एटम्स के राइट और लेफ्ट पे कुछ नहीं होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस. इस पूरे को ना बेंड करके, इस पूरी चीज को बेंड करके आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस. इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे. सो इट वुड बी CH2 CH3 over here without breaking any bonds. So I'm not destroying the structure, not breaking the structure, not changing the structure. और वही काम मैं यहाँ पे करूँगा. CH3 लेफ्ट साइड पे है, तो उसको बेंड करके नीचे की तरफ ले आओ. ठीक है, सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस. बाकी रह गया पॉलीमर बनाना. दैट्स अ डबल बॉन्ड. उसको रिपीट करते जाओ. सो इट्स CH2 and CH3, और उनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड ब्रेक्स, एंड दे स्टार्ट इंटरलिंकिंग विद ईच अदर. ठीक है, ये आपका पॉलीमर हो गया. ठीक है, ये सारों को क्लियर है? इज इट क्लियर है? सिद्रा क्लियर है? महद? Yes. Yes, sir. अच्छा, now we're going to do some examples. कि एक्चुअली एक दो एग्जांपल्स, ये सारी एग्जांपल्स है real world examples that we need to know and their properties. Some of them are, okay, there's a thing called PVC. ठीक है, PVC is, you need to know the structure of PVC. It's frequently used now. Even windows are made from PVC. They're PVC doors. They're PVC tiles. Pipes जो होते थे construction के, plastic pipes, they were always made from PVC. So this is known as polyvinyl chloride. ठीक है, this is polyvinyl chloride, PVC. Uh, and we're going to discuss the structure. The structure is, it's like polyethylene. Okay, it's ethene molecule with the, now ethene has 4 hydrogens. The only difference is कि instead of 1 hydrogen there is 1 Cl over there. और इसका polymer बनता है. You make a polymer out of this. So the double bond would break, and instead you're going to have carbon atoms. And interlinking bonds, ये continuation bonds would be formed, और इसकी जगह N. That's it. ठीक है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ the only difference is कि instead of 1 hydrogen there is 1 Cl. तो इसके uses हम लिख लेते हैं कि this is used in PVC pipes होते हैं. You have windows now being made from PVC. You have tiles, artificial wooden tiles, वो शक्ल से wooden लग रही होती है. They're made from PVC. So that's polyvinyl chloride. Is this clear to everyone? Ahmed, clear है? Saad, is this clear? Yes. Yes, sir. अच्छा, एक और example. The other example is PTFE. Now we need to figure out what PTFE stands for. इसका लंबा चौड़ा मुश्किल सा नाम है, polytetra fluoroethene. ठीक है, that's a name. तो ज़्यादा आसान नाम PTFE है. और it's also in simple नाम जो है इसका, it's also frequently, you just call it Teflon. Now Teflon is also very frequently used in cooking utensils. Most of the frying pans वगैरह अंदर से black होते हैं. ठीक है, that's PTFE. It's used as a non-stick और heat resistant भी होता है. Non-stick in cooking utensils.
तो अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर भी इथीन की तरह होता है, except for the fact कि instead of the hydrogens you have all of them are fluorines. तो जब polymerization होती है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक्स और एन लगा दो और हर जगह वो आ जाएगा, मतलब वो रिपीट यूनिट हो जाएगा, ठीक है? So that's PTFE. So same as ethene. No different, ठीक है? Just remember it's used as a non-stick in cooking utensils. Plus it's heat resistant as well. जैसा नॉर्मल जो आपके शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, देयर आल्सो नॉन स्टिक्स, मतलब वो स्टिक तो नहीं करते किसी चीज के साथ, लेकिन वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, वो मेल्ट कर जाते हैं. तो द गुड थिंग अबाउट पीटीएफई इज दैट इट्स वेरी हीट रेजिस्टेंट. तो दे डोंट बर्न, दे डोंट मेल्ट इजीली. तो इसलिए आप उनको ना कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर लगा सकते हो. अच्छा, नाउ व्हेन वी आर स्टडीइंग पॉलीमर्स, so we must also study the harmful effects of polymers. So we need to know what harmful effects polymers have. So there are a number of polymers. Now most of these polymers are made from raw materials that come from fossil fuels. तो एक तो नंबर वन हार्मफुल इफेक्ट है कि you can't dispose them off easily. They are non biodegradable. इसका मतलब है कि बैक्टीरिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस कि बैक्टीरिया और बाकी चीजें ना कि दे कांट ब्रेक इट डाउन. राइट, सो it's very hard for bacteria to break it down. नॉर्मल चीजें होती है, they decompose. Like if you throw paper uh, anywhere, it's going to rain, it's going to become wet, it's going to become soggy, it's going to eventually break down into tiny, tiny pieces. And after probably a week, you wouldn't be able to see the paper anywhere. Okay, so it decomposes naturally. But if you throw a plastic bag outside, it's not going to decompose, and it takes almost 500 years for it to decompose naturally. So so they're non-biodegradable. So that results in a lot of visual pollution. Like paper thrown or any litter thrown that's biodegradable, it's going to vanish on its own, but not this thing. Actually, the other thing is that you need landfill sites. The number one reason actually you need landfill sites is uh, because of these plastics. But अगर plastics ना होते ना, तो आप अपना कूड़ा ना बस बाहर, you could have dug a ditch and you could have just thrown it over there, and the whole thing would have disappeared in like a week. लेकिन ये जो plastics है ना, and these plastic bags and almost everything around you is now made of plastics. ठीक है, even your devices are made from plastics. Uh, so they don't actually they require landfill sites because it takes them 500 years to decompose. Another one is that animals can consume them and choke on them. Okay, your oceans are right now full of plastics. Then you have then you have एक और चीज थी, you can't get rid of them. Burning produces harmful gases. तो ये एक अलग मसला है. बस चार मसले काफ़ी हैं वैसे, इसके अलावा भी और मसले हैं कि एक और लिख लेते हैं, विजुअल
visual pollution. ठीक है, बल्कि उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, that's not that much of an issue. अच्छा, ये सारे इसके issues हैं, and I think they are self-explanatory. So we can move forward, and you're going to be asked about this. इसका ना कुछ वो कर लेते हैं, बीच में वो भी लिख लेते हैं कि how do you actually manage to मतलब what to do if you want to avoid this. uh, and it could be asked, or general knowledge है कि use uh, biodegradable replacements. That's one. ठीक है, for example, paper bags, paper or cloth, plastic containers की बजाय metal containers. ठीक है, mainly you just need to replace them. That's the only way. I said they're actually trying to create bacteria that can actually consume plastics. अच्छा, the other thing, अब आगे चलते हैं. ये सारा clear है? साथ clear है? Anna, Mahad, is this clear? Yes. So we're going to start studying alcohols now, alcohols and their reactions. Now, when we talk about alcohols, first the introduction, that is, they have a general formula which is CnH2n plus 1, CnH2n plus 1, and OH. ठीक है, that's the general formula. और alcohols में कि अच्छा, alcohols में क्या है कि they have this OH functional group. कहीं ना कहीं OH होगा, और इसमें होगा कि but they have the OH functional group. एक दो molecules कर लेते हैं. For example, if I have an alcohol and there's an OH, or remember OH में जो O वाला part है ना, that's the one that's bonded. तो इसके साथ सारे H लगे हुए हैं. अच्छा, इसका नाम क्या होगा? It's going to be called prop, and it would be called propanol. लेकिन all से पहले पोजीशन बतानी होगी कि किस कार्बन आटम के ऊपर. तो अगर मैं हाईलाइट करूं, it's on the second carbon atom, so it's going to be propan 2 all. ठीक है, just like alkenes, you have to tell the position. So this is what an alcohol is. इसकी physical properties पढ़ चुके हैं हम कि they have high melting and boiling points relatively. Compared to your alkanes and alkenes. ठीक है, वो they were mostly gases. These are not. These are liquids. Usually liquids. And the other thing was the non-conductors. ठीक है, that's pretty much it. It sums up alcohols. I think the formation. अच्छा, how do you form alcohols? Now, the first one was hydration of alkenes. ठीक है, that's the first one. Uh, that look at this molecule of Panadol or paracetamol. Anything that has all in it has an OH group. तो ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है, there's an
If you can see over here, there's an OH group over here. तो जितने भी organic molecules है ना, which I mean, most of the drug molecules that you have on a daily basis, paracetamol or Panadol, that is frequently used. Uh, so that's an alcohol as well. So one way to make medicines, like if you're trying to make a Panadol molecule, so and your starting material is an alkene. So one way you could do this is by hydration of alkenes. We did this reaction already. Like if you want to introduce an OH group anywhere, तो alkenes के अंदर ना we did before we did this thing, we did this hydration reaction, not hydrogenation. We did a hydration reaction. So you have a hydration reaction over here. उसमें क्या होता था कि you had water. So there's this water molecule that's going to react with an alkene. उसका functional group होगा. और उस alkene की जगह ना the H and OH would get bonded and you'll get an alcohol. उसके लिए जो conditions use होती थी ना, they were these conditions. You had 360 atmosphere H3PO4 as a catalyst, right? So we've already studied this reaction. Is it clear? Mahad clear? Sidra? Yes, sir. Yes, sir. So I'm not going to study that. That's number one. The second method is, तो एक तो आपको ये दवाइयाँ बनाने मेडिसिन बनाने के लिए ना यू हैव टू कहीं ना कहीं बीच में OH डालना पड़ता है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर. सो यू कैन डू दैट यूजिंग हाइड्रेशन रिएक्शंस. अच्छा, फिर एक वो है कि जो इंडस्ट्री अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रिंक्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, बट दे ऑफन आल्सो यूज्ड एज फ्यूल. ठीक है, दोज द सेम अल्कोहल्स are used as fuels in a number of countries. So how are they produced? So that reaction is known as fermentation. कि वो जो large scale के ऊपर ना, mass scale के ऊपर they ferment sugars or fermentation of glucose. ठीक है, specifically glucose. When they do that, alcohols are produced. तो इसके बारे में ना पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अल्कोहल्स वो भी हैं, मोस्ट ऑफ योर हैंड सैनिटाइजर्स दैट यू यूजिंग राइट नाउ. तो ये आते हैं अल्कोहल्स. एक तो वो मैस स्केल के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यूज होते हैं. पार्ट उनका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, दैट्स यूज्ड एज फ्यूल्स. दे यूज एज मेडिसिन के अंदर बहुत यूज होते हैं. आपके जो जितने भी हैंड सैनिटाइजर्स आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स they all alcohol based. ठीक है, they alcohols are वो होते हैं antibacterial and they have antiviral properties. So fermentation of glucose. Glucose molecule equation simply याद रखनी है, C6H12O6. और ये आप इवन ना अपने उसमें करते हो, पिज्जा डो वगैरह बना रहे होते हो ना, तो यू डू द सेम रिएक्शन. अच्छा, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लूकोज और दे कंटेन ग्लूकोज. तो ग्लूकोज जो है, दे यू ऐड यीस्ट टू इट. ठीक है, यीस्ट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ठीक है, इट्स अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड इट ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू ethanol, C2H5, and OH is produced. एंड साथ ही ना कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. तो जो आपकी डो होती है ना, पिज्जा की डो, व्हाई डज इट राइज अप? बिकॉज बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस्ड जब आप उसमें ना यीस्ट ऐड करते हो. वाइल इवन बेकिंग के अंदर ना, यूर बेकिंग के अंदर तो खैर बेकिंग पाउडर यूज होता है, पिज्जा डो के अंदर यीस्ट यूज होती है. अच्छा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इट राइजेस अप. अच्छा, अनदर थिंग इज के it has to be anaerobic conditions. तो anaerobic conditions का मतलब है कि absence of oxygen. ठीक है, there should not be any oxygen present. क्योंकि in the presence or
That's the only thing. और temperature जो होना चाहिए that should be 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. इसलिए ना वो उन्होंने बैरल्स के अंदर ना यीस्ट ऐड करके दे स्टोर इट इन सेलर्स. So fermentation keeps happening, but it's very essential that there is no oxygen present. The complete absence of oxygen. And what's going to happen is कि अच्छा what's going to happen is कि बहुत ही कम अमाउंट ना उसका प्रोड्यूस होता है अल्कोहल का. दिस रिएक्शन हैज वेरी लो यील्ड. ठीक है, रिएक्शन हैज वेरी लो यील्ड. अच्छा, उसका मतलब ये कि और रीजन क्या है, मतलब बहुत ही कम अल्कोहल प्रोड्यूस होता है इसके अंदर. हार्डली हार्डली कुछ परसेंट. ठीक है, 4-5% के बाद ना रिएक्शन रुक जाता है. वो इसलिए कि हमने क्या पढ़ा था कि अल्कोहल जो है आपके हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह दे एंटी बैक्टीरियल. तो यीस्ट इज काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया और फंगस होती है प्रॉब्लम. ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यीस्ट इज it's kind of a living organism that's breaking this down. तो मतलब बैक्टीरिया फंगस में से ना कोई चीज है. अल्कोहल क्या करेगा? अल्कोहल इज एंटी बैक्टीरियल. इट so it's going to kill the yeast as soon as it is produced. So the reaction has very low yield as alcohol produced. It kills the yeast. और दूसरा ये कि अल्कोहल को ना आप रिमूव कर लेते हो बाय डिस्टिलेशन. So the alcohol is removed by distillation. ठीक है, उसको आप डिस्टिल ऑफ कर देते हो. एंड that's the whole process. Another thing about this is कि if oxygen is present, so what happens is the alcohol gets oxidized to carboxylic acid. Or and that is basically an acid. ठीक है, so that's very harmful. You don't want that to happen. So oxygen has to be, it has to be absent at all cost. Another thing that you're going to be asked about this is they're going to ask you about this thing 25 to 35. Okay, why is this the optimum temperature? The reason this is because yeast is biological, right? It's a biological catalyst. So the problem would be that at low temperatures it is inactive. Okay, if somebody has baked or made pizza dough before, so when you add yeast, you have to sort of add it in warm water. So low temperature pe it's inactive, or high temperature ke pe it simply dies. तो उसका एक वर्ड होता है which is denatured. ठीक है, which simply means कि it dies off. तो ये याद रखना है 25 to 35 is a very optimum temperature. All biological things they pretty much operate at around that temperature 25 to 35. उसके ऊपर ही ऑपरेट करते हैं. अच्छा, is this clear? Is this all clear? साथ clear है? Yes, sir. अच्छा चलिए ठीक है, ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज हो गया.
इसके अंदर तो और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। डायग्राम्स ऑल द इतने नहीं, डायग्राम्स भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी भी उन्होंने नहीं पूछा। बस ये याद रखना कि ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, और 25 टू 35 क्यों होता है, और इसकी यील्ड बड़ी कम है क्योंकि वो जैसे ही अल्कोहल प्रोड्यूस होगा ना, सबसे पहला काम उसे करना है कि उसने उसने जाके ना उसी को मार देना है, यीस्ट को। इट्स गोइंग टू किल द यीस्ट। सो हेंस वो अल्कोहल प्रोड्यूस होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, दिस इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू मेक अल्कोहल्स। अब ये कि अगला पार्ट है अल्कोहल्स का। द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपने क्या करना है। आपने मगर नेक्स्ट पार्ट अभी ना ही करें तो बेहतर है। वी गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस नाउ, कि जितना आपने पढ़ा है उसको उसकी हम रिवीजन करें, ठीक है। सो स्टार्ट सेंडिंग मी दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, एल्कीन्स तो हमने पूरा कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट दीज रिएक्शंस के एक, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू सेंड मी द आंसर्स। अच्छा, ब्रोमिनेशन ऑफ butadiene. Second question, why is bromination done? ठीक है, everyone try and solve these questions. As number 3, अच्छा नंबर 3 इस मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन करो। नंबर 4, polymerize hexguanine. Sir, do we send you the answers one by one or just Um, just do 3 and then send. I mean, if you're done with 3, then send me the answer. जिनके साथ मुझे इक्वेशन चाहिए, आई एम राइटिंग इक्वेशन।